ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्काराय नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम परब्रह्मणे श्रुतिमात्रे समस्त ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्या आचार्येभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री वशिष्ठ विश्वामित्राभ्यां नमः। ओम श्री वाल्मीकि तुलसीदासाभ्यां नमः। ओम श्री वेदव्यास महर्षिये नमः। समस्त श्रीमद् रामायण महाशास्त्राचार्येभ्यो नमः। श्री राम भक्तेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। संकल्पः तेषां सर्वेषां कृपया उपनिषदुक्त ब्रह्मात्मैक्यबोधस्य अस्मिन् क्षणे एव अनुभवसिद्ध्यर्थं पुराणेत्यासोक्त भगवद्भागवत दर्शनानुग्रहानुभव प्राप्त्यर्थं सनातनधर्मस्य वैदिकं स्मृतेः पुनरुत्थानजागरण विश्वव्याप्त्यर्थं तत्कृत निश्चित समस्त भक्त साधकानां सदा सर्वदा संरक्षणद्वारेण शक्ति भक्ति ज्ञान समस्त सानुकूल्यता प्राप्ति द्वारा धर्म संस्थापन कार्ये दिग्विजय प्राप्त्यर्थं श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रस्य पारायणम् अध्ययनं तदनन्तरं श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः पद्मावती मातुः अष्टोत्तर शतनामावल्यः पारायणं वयं सर्वे करिष्यामहे। आदौ श्री रामनाम संकीर्तनम्। ओम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम। ओम नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्री अथ श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रम किष्किंधा कांडम तृतीय सर्गः। श्री महादेव उवाच श्रीराम उवाच। फ्रेंड्स, फ्रॉम 21 up to 35 let us chant. ओम मन एव हि संसारः बन्धश्चैव मनः शुभे आत्मा मनः समानत्वम् एत्यतद्गतबन्धभाक् यथा विशुद्धः स्फटिकः अलक्तकादिसमीपगः तत्तत् वर्णयुक् आभाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनं बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यात् आत्मनः संसृतिर्बलात् आत्मा स्वलिंगं तु मनः परिगृह्य तदुद्भवान् कामान् जुषन् गुणैर्बद्धः संसारे अवर्तते अवशः आदौ मनोगुणान् सृष्ट्वा ततः कर्माण्यनेकधा शुक्ललोहितकृष्णानि गतयस्तत्समानतः एवं कर्म वशात् जीवः भ्रमत्याभूतसम्प्लवम् सर्वोपसंहृतौ जीवः वासनाभिः स्वकर्मभिः अनाद्यविद्यावशगः तिष्ठत्यभिनिवेशतः सृष्टिकाले पुनः पूर्व वासना मानसैः सह जायते पुनरप्येवं घटे यन्त्रमिवावशः यदा पुण्यविशेषेण लभते संगतिं सतां मद्भक्तानां सुशान्तानां तदा मद्विषया मतिः मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुर्लभा जायते ततः ततः स्वरूपविज्ञानम् अनायासेन जायते तदाचार्यप्रसादेन वाक्यार्थज्ञानतः क्षणात् देहेन्द्रियमनः प्राण अहङ्कृतिभ्यः पृथक् स्थितं स्वात्मानुभवतः सत्यम् आनन्दात्मानमद्वयं ज्ञात्वा सद्यो भवेन्मुक्तः
सत्यमेव मयोदितम् एवं मयोदितं सम्यक् आलोचयति योनिशं तस्य संसार दुःखानि न स्पृशन्ति कदाचन त्वमप्येतन्मया प्रोक्तम् आलोचय विशुद्धधीः न स्पृश्यसे दुःखजालैः कर्मबन्धात् विमोक्ष्यसे पूर्वजन्मनि ते शुभ्रो कृता मद्भक्तिरुत्तमा अतस्तव विमोक्षाय रूपं मे दर्शितं शुभे ध्यात्वा मद्रूपमनिशम् आलोचय मयोदितं प्रवाहपतितं कार्यं कुर्वत्यपि न लिप्यसे ॐ शान्ति श्रीरामेणोदितं सर्वं श्रुत्वा तारातिविस्मिता देहाभिमानजं शोकं त्यक्त्वा नत्वा रघुत्तमम् आत्मानुभवसन्तुष्टा जीवन्मुक्ता बभूवः क्षणसङ्गममात्रेण रामेण परमात्मना अनादिबन्धनं निर्धूय मुक्ता सापि विकल्मषा अनादिबन्धं निर्धूय मुक्ता सापि विकल्मषा ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. What we are doing last few days in Adhyatma Ramayanam is called as Vedanta Charcha, Tattva Chintana, Atmanatma Viveka and Bandha Moksha Chintana. These are all very subtle, very intellectual. Intellectual understanding, then followed by due practices and coming out of the experience of bondage into the experience of liberation. Then even to come into this track of thinking lots of light punya is required. Then thinking giving us the correct understanding, that also takes a lot of attempts. So let us attempt every day to listen, to contemplate, to think, to understand. By God's grace, if not immediately, after a few attempts, definitely we will understand what is the bandha lakshanam, what is moksha lakshanam, what is the bandha karanam, what is moksha karanam ityad. So here we have seen yesterday the verses from 21 onwards. Very powerful, very beautiful, very complete topic it is. Same thing, even Shukadevji will be teaching Parikshit as the last teaching. Before they get apart, Shukadevji goes away. The snake comes and bites the Parikshit. Much before that, Parikshitji leaves the Deha, becomes one with Paramatma. At that point, in that context, what is taught is this only. Same we are seeing in our Bhagavata, other skandhas, in our Upanishads, everywhere. That knowledge is given here to us. Again, let us repeat, remind ourselves what is said yesterday, the 2-3 things. First, manaha evahi samsaraha. Other than mana, there is no samsara. A best proof is in Nidra. Nidra, there is no samsara. Of desires, running for desires, when this or that thing and not getting fulfilled, therefore miserable, then finding the shortcut methods and they also don't work. We are caught and we are given red and blue. All this never happen in Nidra because there is no samsara in Nidra because there is no mana. But Nidra is not permanent elimination of mana. Mana is in Layavastha. Therefore, inevitably we wake up from Nidra, coming to Jagrata Avastha where mind is predominant. That mind through Raga Dveshadi creates samsara. Therefore, mana evahi samsaraha. It's a simple looking complete sentence. Same mana, when it is instead of going toward the world, goes towards the Lord, becomes cause of sadhana. At the culmination level, that mind is transcended siddhi of knowing the self. So mana eva hi samsara. And that mana eva hi bandha, bandhasyeva manashubhe. Therefore, why the mind is called to be bandhana? Because it is the one which creates all the samsara. And how? ऊपर का लाइन मैंने कहा ऐड करो राग द्वेषादि संकुलः मनः एव हि samsarah bandhah च एव मनः. So both the bandhanam and samsari bandhan hai, created by the mind filled with raga dvesha. And if the mind is freed from raga dvesha, it is no mind. It's a shuddha mana, sattvika mana. And in that mana, first as an understanding, the Lord's knowledge will dawn. Later on, using that understanding, when we go deep into meditation, transcending the mind, we get the experience of Paramatma also. There is no doubt at all. This is what we are studying in our Taittiriya Upanishad, Mundaka Upanishad, and all of that. So, mana evahi samsara. Which mana?
Raga Dvesha Adi Sankula. Sankula means filled with. Raga Dvesha Kama Krodha इत्यादि दुर्गुण से भरा हुआ मन ही हमको कामनादियों के कारण दुष्कर्म करा के हर तरह के जन्म में ले जाने वाला बंधन का कारण है. सो राग द्वेषादि संकुल मन एव संसार बंध मन एव. हो गया. हाउ इट हैपेंस, व्हाट टू डू, these are the few discussions. One, atma manah samanatvametya. Atma manah samanatvametya. Mind having come in association or identity, self coming in identity and association attachment with the manaha, tad gata bandhavaku. Therefore, it gets bound. Again, I am saying atma manah samanatvametya. Mind, self being identified with the mana, then tad gata bandhavaku. Is that mind really getting identified? Is it really getting bound? Really, it is not. Impossible. Because the state of mind is different, state of the Atma is different. Just like during Grahanam. Is it really the Rahu or whatever covering the sun or moon? Impossible, because बीच में लाखों किलोमीटर का distance है. And the size of sun is thousands of times bigger than this Rahu. And Rahu is actually, from where he comes, we don't know that Graha. Rahu consumes, it is visually said. This is Raho Vata will be tomorrow. The topic will come in our Taittiriya Upanishad discussion. Tomorrow only it will come. Example will come. Surya Chandra Rahu example will come. So Rahu is not a planet according to astronomy, but he is a planet according to astrology. He is placed in the Kundali of the human beings depending on the position of Surya and Chandra. He has got none of his own personal position. But he is there in calendar every day, Rahu Kalam, Rahu Kalam. So, Surya, Chandra, Rahu. So, the itna dur hai. So, to Chandamama covering the sun, then it is called as the Surya Grahanam. And then Bhumi coming in between Chandra and Surya, then the Chandra Grahanam. It is such a far off distance they are. In the same way, the subtlety of the Atma is different, the mind and its level is different. Therefore, never ever the mind can enter the Atma can identify. Yet, because of their proximity, the superimposition of qualities of mind as if appear on the self. To make this point clear is the example. What is the example? Yatha Vishuddha Spatikaha. First Spatika is Vishuddha in all three periods of time. Before the colored cloth brought, during the colored cloth, after. Before and after, so anyway Vishuddha, there is no doubt. But only when the cloth is brought near, the Spatika as if gathers the color, as if appears in that color. The most important point is ASIF, as if, eva. Really nahi. So, Vishuddha Spatika alaktadi samipagaha tat tat varnayug abhati. उस कलर वाला लगता है, वस्तुतः न अस्ति रंजनम. The ranjanam, the coloring to that crystal, vastutah in reality na asti, it never happened. As what yesterday we said, if really the coloring happens to the crystal, then when the cloth is taken away, the crystal should appear in that color only. But it never is seen. When it goes away, there is no color crystal. In the same way, if the mana guna come into the self and pollute the self, after getting polluted with the mana, no individual should get liberation of detaching from the mana and establishing in Shuddha Atma. But all sadhakas are, whoever doing sadhana sincerely, keeping themselves away from the mana, they are establishing their Shuddha Atma Anubhava. That means what? It was near to the mana, therefore appear to be identified, therefore appear to have gathered the qualities of the mind, but really the self is never touched. So this reality we have to understand. The other thing is what? Because of the proximity with mana, as if the Atma gathers the qualities of the mana. At that time, Atma alone plays the role of Jiva. When the Jiva distances himself from the Alakta Sthaniya, the mana, as much as so much, then the Jiva dissolves his Jiva Bhava, is one with, he discovers himself to Paramatma. Again we said, wherever the husband is there, there alone is man there. Wherever the father is there, there alone is mother. Father is through the upadhi of son.
The moment the upadhi removed, the man himself is, the father himself is man. In the same way. So contemplate on this thing more and more. And what is the meaning of proximity with the mana? Means living the life at the level of mana. And what is mana? Raga dvesha adi sankulaha. If the raga dvesha is not there, then the destructive mind will not be there. That mind say aham atma tadatma nahi hoga, then samsari jiva ka utpatti nahi hoga. I am no more a jiva samsari. Think about these things as much as possible. Beautiful explanation, useful example, great analysis. At no period the Spatika gathered the color, but in between it appeared when it was near to that cloth. At no period the Atma is becoming samsari or jiva. But then, because its proximity, as long as with the mana, appears to have gathered, the manas lakshanas are doing playing the role of jiva. But anytime the cloth can be taken away, allowing the spatika to be Shuddha. Anytime one can detach from the mana and remain in the Shuddha Atma Anubhuti. Therefore, in yoga, the mana called as chitta with vrittis, vritti nirodha is done, then Atma Anubhuti comes. In Vedanta, by being the sakshi of the mana, we discover our essential self. After that, when you look back, there is no mana. In bhakti, the mana is arpita to Bhagavan. Bhagavan eats away the mana. What remains is Atma. Because you gave it to Bhagavan. All sadhanas in all religions, especially let's talk Hinduism, all paths are only in the management of the mind, in the purification of the mind, in the transcending of the mind, so that the real transcendental self is realized. And we all have to thoroughly understand these two things. As long as I am identifying with the mana, I am a samsari. If I want to get out of bandhanam, get into moksha, I have to enter into the self by detaching from the mana. If this understanding has come, you have understood Vedanta, all your listening to all your gurus has become fruitful. If this is not understood or not tried to practice, we are pakka samsari, we are only natak wale. We are a professional satsangi, not a sincere and serious satsangi. प्रोफेशनल सत्संगी उस गांव में जो भी महात्मा आते हैं सबको सुनकर रख देते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, पैसे देते हैं, उनको दक्षिणा, घर बुलाते हैं, खाना देते हैं और रिवाज हो जाता है. Like we saw in other class also, how we become mechanically upasakas and all, shrotas of Bhagavatam, never understanding the Viveka Vairagya Bhakti Jnana. Today in the introduction we spoke for 15 minutes, just 1 hour back. So, mana atma, sorry, mana eva hi samsarah, bandha eva cha manah, atma manah samanatvametya, tat kata bandha bhak bhavati. Can you give us udaharana? Udaharana is yatha vishuddha spatikaha, alaktadi samipagaha, tadvad varna yug abhati, but vastutaha ranjanam na asti. Being in proximity appears to have gathered color, but not really. Now, examples over. Now, sadhana. Understanding for sadhana is buddhi indriyadi samipyatu atmanah balat samsruti. It's zabardasti samsar hai atma ko जीव बनकर because samipyatu buddhi indriyadi, because the proximity with buddhi indriya. That's why buddhi indriya used only for dharma and buddhi indriya used for paramatma anveshana. For some distance, only things to be done. Other than that, anything we do with buddhi, we get identified with the buddhi, and buddhi means all the faculties, we become samsari. And on seat of meditation, what we have to do is mano buddhi ahankara chittani naham na cha shrota jihve na cha grana netre na cha vyoma bhumir na tejo na vayu chidananda rupa shivoham shivoham na cha prana sagno na vai panchavayu na vakpanipada na chopastapayuh अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम. दिस इज टू बी डन एवरी डे. देखो जितना भी थियरी समझो, इसको किए बिना साधना नहीं होता. एंड इसको करने में कुछ शर्म लगता है. मैं क्या करूं साहब, तो समझ तो गया ना, अब बाद में करेंगे. दिस इज हाउ आवर माइंड deludes us by not allowing us to do what the intellect is convinced of. इंटेलेक्ट को समझ में आ गया ये बंधन है, ये मोक्ष है, करने से मोक्ष मिलता है. बट डू यू थिंक द माइंड विल अलाउ? इट बिकम सेंटिमेंटल, इट बिकम्स इमोशनल, इट बिकम वेरियस. इट यूजेस एवरी वेपन एंड इट हैज मिलियन वेपन्स. और कुछ ना कुछ वेपन लग ही जाता है हमको, तीर. एंड देन वी पोस्ट.
Those who have never understood तो उनकी बात तो दूर ही है, जो समझ गए वो लोगों को भी फँसाते रहते हैं मन। कहते हो तुमको मैंने समझने दिया ना, क्लास को जाने दिया ना, हाँ? तुम आत्मा हो या तुम इंद्रिय देह मैं नहीं हो, तो देह इंद्रिय सब छोड़कर तुमको आत्मा बनना है? हाँ, करेक्ट? माइंड इज़ आस्किंग अस और अल्टीमेटली बोलती है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, सब ठीक है बट अब नहीं। इस जन्म में पूरा एन्जॉय करो, अगले जन्म देखना। अगले जन्म में ऐसे ही, इसी तरह से सो मेनी जन्मास अगले-अगले करके एवरी लाइफ वी आर लिविंग इंग्लिशली अगली ओनली, पोस्टपोनिंग फॉर अगली जन्म। दिस इज द चीटिंग ऑफ द माइंड, यू हैव टू रिकॉग्नाइज एंड स्ट्रेंथन द इंटेलेक्ट। और कुछ भी करके ऐसे स्ट्रांग डिसीजन लेकर मन का बात नहीं सुनते हुए गुरु के शास्त्र के बात का साधना करना है। दिस इज हाउ वी डिफीट द माइंड। है ना, आई टोल्ड यू वन डे वन ऑफ द प्लेसेस श्लोका इज रिटन कि ऐसे दांत को चबाते हुए हाथ को मसलते हुए पूरे सांस को अंदर लेकर ऐसे दबा दो तुम्हारे इस मन को कि वो इट शुड नॉट शो इट्स पावर स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग अवर साधन। दंतैः दंतान् विनिष्पिष्ट्य सम श्लोका इज देयर, हस्तैः हस्तान् देन मनः निग्रहं कुर्यात्। कभी ऐसा भी करना है, कभी टेमिंग करना है प्यार से। एवरी वॉट एवर वर्क्स दैट वर्क्स, सो यूज वॉट वर्क्स। एवरी टाइम यू कैनॉट डू द फोर्सिंग ऑफ द माइंड। एवरी टाइम यू कांट बी वेरी फ्रेंडली आल्ट ऑन द माइंड लाइक योर चिल्ड्रन। हर चीज आप यूज करते हो, चाइल्ड एंड माइंड आर सेम। You love him, you threaten him, you beat also once or twice, you give punishment, you give gifts. That is how the child is taken care in the right path. So to the mind. Once in a while, we have to do this strong thing. Otherwise, it will postpone. First of all, it never allowed us to understand this thing for millions of things. Somehow, we have understood in this life. वो कहते समझ तो नहीं आना, अभी 10 जन्म के तक बात नहीं पूछना मेरे को। बस listen to whatever I say. Let us have kama krodha raga dvesha. Let us this way try to enjoy and get miserable. That's how the mind says. Be careful about it. So, buddhi indriyadi samipyat. And what is the samipata of the buddhi indriya with atma? Aham, mama, mahyam, these three notions. Cut those notions. Like that body, this body is not me, this also not me. And like that mana, this mana not me, so too this is not. But they are not given to me for operation, these are given to for operation. Only for operation purpose they are given, not for the parishani purpose. When you do it for operation, it never becomes troublesome. Only when you own it as yours, it becomes a cause of parishani. I am a driver of the car. Car is given to the government to take the officer. The officer is taken to different places. He is dropped at home finally. Car is parked in the office. I take my cycle and go home. So simple. When will the problem start? When I say that car is mine. Is it not? The upadhis are given for the jiva to do the sadhana. साधना के लिए यूज करो, बस उसको पार्क करो, बस अपना मत मानो. Which is so tough because for millions of lives we owned those upadhis. With the given freedom, we just lived life licentiously. अब बन नहीं रहा बात. एक बच्चे को आप अपने टीवी देखने के लिए सेल फोन देते गए, 3-4 साल में उसको शैतान की तरह सेल फोन का इतना आदत हो जाता है, आप यू कैनॉट टेक अवे सेल फोन फ्रॉम हिम. फॉर हिम इट हैज बिकम इन दुनिया. नाउ द 10% of children in the world between age of 3 to 6 are addicted to the cell phone or those whatever you call iPods, like छोटे छोटे कम इतना हो गए वो लोग. And they operate so much destroyed. आदत हो गया, you can't change it. We have made a habit of the mind for so long, so it is taking time. And 3 days back, I received this. You all have received it million times. See, the only thing the animals have learned from human being and destroyed themselves. All other things we learned. What is that? One monkey or orangutan, something chimpanzee. It was operating the cell phone. मनीषी से ह्यूमन बीइंग से दुस्संग के कारण बिगड़ा हुआ जानवर. फर्स्ट सैंपल it is using the phone. It was doing also exactly it is going through. जानवर एडिक्शन हो गया, यू कांट कम आउट. वी आर एडिक्टेड टू देहो हम पंच बुद्धि इंद्रिय मना अहम. हमको ऐसा लगता है ना जमीन के नीचे ना वो जमीन खिसक जा रहा है अगर हम इसको छोड़ दे तो. बट रिमेंबर एज ए आत्मा वी आर ऑलवेज इटर्नली देयर. When you strengthen this knowledge,
The fear that what will happen to me if I detach from the upadhi, that goes away. That is to be conquered. After that conquering is done, then slowly in the sadhana we can really do those abhyasas. Actually, all the abhyasas of yoga and Vedanta start becoming meaningful only after these two things. The self is eternal, I am that self. When I detach from the upadhi, I don't die, I remain as a self which is infinite. Therefore, it is better to seek that. When this conviction comes, then only with any of this marga we try to transcend the upadhis. नहीं तो कितना भी शास्त्र पढ़ो ऊपर ऊपर, अंदर तो पता नहीं क्या होगा इफ आई लीव मैं आइडेंटिटी देह उपाधि। और पूरा छोड़ने को भी नहीं कह रहे, संसार कारण रूपी कर्म करो मत उपाधियों से, साधना रूपी कर्म करो। बट एट द हायर लेवल ऑफ साधना, टू एंटर इनटू द पोर्टल्स ऑफ द लॉर्ड, वी हैव टू डिटैच टोटली फ्रॉम द आइडेंटिटी, बिकॉज दोनों कट्टे नहीं रह सकते हैं। माया है, उपाधियां, परमात्मा ऊपर है, और तो करना हो तो कम से कम कुछ समय के लिए वी हैव टू डिटैच and established. Once established, again Bhagavan gives our own upadhis back to us to get his work done through us. That's all post realization. पहले तो पहले की बात समझो। तो बुद्धि इंद्रियादि सामीप्याद आत्मना संस्कृति मला हो गया। Now in the next 2.5 shlokas, the step by step how we fall, that is given. I'll just narrate it and that should be enough. Tomorrow we'll continue what is beyond. He says Atma Swalingam tu Manah Parigruhya. I told you the mana is the linga for the Atma. Atma has no limbs, etc. to express. Its presence is recognized only through its expression through the upadhis. So that self only, Swalingam Parigruhya. When it comes in close proximity with it, Tad Udbhavan Kaman Jushan. All the Kamanas are in the mind. So identify with the mind, followed by identify with the desires of the mana, guna ehi baddhaha. He gets bound by saptarajas tamoguna of the world. Samsare vartate. It goes on entering to samsara avasha. Who? Atma. But real Atma, did it become? No. Then which Atma is this? Therefore add a word Jiva, called as Jiva. So upadhi rahita is Paramatma, upadhi sahita is Jiva. So when the mind is functioning through the upadhi, when the self is functioning through upadhi, if it is not very conscious and careful, then the identity with the upadhi can happen. Then he becomes a jiva. Then the upadhiyon mein jo guna hai, usko apna mankar, he acts according to them and he gets the results and gets bound up. So atma swalingam manah parigruhya. 2 points. The self, its own linga is mana, having getting identified with it, tat udbhavan kaman jushan, to enjoy the desires born in the mind or upadhis, gunair baddhaha. So first it gets the gnanam, that is sattva lakshana, then it does the kriya, the rajoguna, then it gets the object and indulges in it, tamogunaha. Samsare vartate vashaha, avashaha. Therefore, adau, what happens? Manah gunan sruštva. First, mind, because it's made out of Maya, it creates the three gunas. The three gunas created by the mind is first a desire for an object, that is Rajoguna. Then the knowledge to gain the object, that's called Sattva Guna. Then indulging the object to work, that is Rajoguna with Tamoguna. When the work happens, the result comes. Again, it indulges in the desire. In this way, the mana gunan sushtva. First, it creates the gunas, tatha karmani anekadha. According to these three gunas, the mind does all the karma. What are the three types of karma? Shukla, Lohita, Krishnani. In the mind, if the Sattva guna comes, the Sattva guna karma, Yajna, Yaga, Upasana, it does. If the Rajoguna does karma, comes in the mind, Rajasic karmas of all these desire fulfilling actions, it does. Then if the Tamoguna predominant, all the Himsataka karma, it does. Because of these three karmas, Gataya Tatsamanataha. When he does Sattva karma of Yajnayaga, Uttama Loka, Rajoguna karma of the Manushya Loka, Tamoguna karma Narakadi Loka. In this way, Evam Karma Vashat, Jivaha Brahmati, not Paramatma, Abhuta Samplavam, till the Pralaya happens. Now, at the time of Pralaya, will he get liberation? No, 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 no. The continuation is what? Sarva Upasamhrutau. When the whole Pralaya mein, every Prakriti goes to Mula Prakriti, Jivaha, उनको क्या होता है? वासना भी स्वकर्म भी, the vasanas created of his own vasana karmas, anadi avidyavashaga tishtati aviniveshataha. He just taking all his avidya and vasanas stays in that mula prakriti koi karana at the time of pralayam.
Then what happens? Srushti Kale, when again the Pralayam is over, new Srushti comes. Punaha, again, Pura Vasana Manasehi, with the earlier Vasanas and Vasana born mind, he is given Jayate Punaha Api, Evam Ghati Yantramiva Avashaha. In this way, like घटी यंत्र के समान, every सृष्टि प्रलय में भी उनका आत्मज्ञान नहीं हुआ तो बंधन खत्म नहीं होता. You will only go along in the प्रलय काला into the बीज अवस्था, again only to be born, again another the सृष्टि comes. So the घटी यंत्र example is that there is a machine kept to take the water. It is ground होता है और एक एक में वो पानी पकड़ने का होते हैं. So it goes into the water and brings the water up, and while coming down it pours the water in that pipe sort of thing, and through that pipe sort of thing the water falls in the goes into the fields etc. So ऊपर आया नीचे गया पानी ले आया. इस तरह से प्रलय में हम पूरे बीजावस्था में जाते हैं. अगेन सृष्टि में I with my samskara accordingly that type of antakarana and dehadi I am thrown till the pralaya happens. I do sattvic rasic tamasic karma, jump from one life to the other, and at the pralaya kala again going to bijavastha. Come to take a chakkar, that is what is the next topic. Only in the Atma Jnana. And how to get the Atma Jnanam? What are the steps involved? Bhagavan is going to teach us. Tomorrow we'll study. See how important, how complete is this topic if we really have patience and love to study. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृतकलशस्थाय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः. ओम भक्त्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्तके की गणागणारो वरदं भोलिर मृत्युदार कुठारिकाय नमो. ओम नासै रोगरेसो वीरा जपत निरंतरवत वीरा. ओम श्री हनुमवीराय नमः. ओम श्री हनुमते नमः. 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 ओम श्री हनुमते नमः. श्री हनुमते नमः. श्री हनुमते नमः. श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते नमः. श्री हनुमते नमः. श्री हनुमते नमः. श्री हनुमते नमः. ओम नमः शिवाय. 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 ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मीनारसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मीनारसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मीनारसिंहाय प्रह्लादाय च नमः. ओम राम 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 राम
ओम अथ श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः पद्मावती मातु कृपया उपनिषदुक्त ब्रह्मात्मैक्य बोधस्य अस्मिन् क्षणे एव सिद्ध्यर्थं पुराणे इतिहासोक्त भगवद्भाव दर्शनानुग्रह प्राप्त्यर्थं सनातन धर्म से वैदिक संस्कृते पुनरुत्थान जागृति व्याप्त्यर्थं श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः पद्मावती मातुः अष्टोत्तर शतनामावल्याः पारायणं मनःपूर्वक उपासना समेत वयं सर्वे करिष्यामहे. श्री भगवान बालाजी वेंकटेश्वर as well as Padmavati Mata. Very powerful, beautiful. Keep Lord Venkateshwara in the heart and close your eyes and offer flowers at his feet. When I am chanting the mantras, you can say Om and Namaha. Om in the beginning, Namaha at the end, and enjoy it. ओम श्री वेंकटेशाय नमः. ओम श्रीनिवासाय नमः. ओम लक्ष्मीपतये नमः. ओम अनामयाय नमः. ओम अमृतांशाय नमः. ओम जगद्वन्द्याय नमः. ओम गोविंदाय नमः. ओम शाश्वताय नमः. ओम प्रभवे नमः. ओम शेषाद्रिनिलयाय नमः. ओम देवाय नमः. ओम केशवाय नमः. ओम मधुसूदनाय नमः. ओम अमृताय नमः. ओम माधवाय नमः. ओम कृष्णाय नमः. ओम श्री हरये नमः. ओम ज्ञानपंजराय नमः.
ओम श्रीवत्सवक्षसे नमः। ओम सर्वेशाय नमः। ओम गोपालाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम गोपीश्वराय नमः। ओम परम ज्योतिषे नमः। ओम वैकुंठपतये नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम सुधातनवे नमः। ओम यादवेन्द्राय नमः। ओम नित्ययौवनरूपवते नमः। ओम चतुर्वेदात्मकाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम पद्मिनी प्रियाय नमः। ओम धरापतये नमः। ओम सुरपतये नमः। ओम निर्मलाय नमः। ओम देवपूजिताय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम चक्रधराय नमः। ओम त्रिधाम्ने नमः। ओम त्रिगुणाश्रयाय नमः। ओम निर्विकल्पाय नमः। ओम निष्कलंकाय नमः। ओम निरांतकाय नमः। ओम निरंजनाय नमः। ओम निराभासाय नमः। ओम नित्यतृप्ताय नमः। ओम निरुपद्रवाय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम गदाधराय नमः। ओम शार्ङ्गपाणये नमः। ओम नंदकिने नमः। ओम शंखधारकाय नमः। ओम अनेकमूर्तये नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम कटिहस्ताय नमः। ओम वरप्रदाय नमः। ओम अनेकात्मने नमः। ओम दीनबंधवे नमः। ओम आर्तलोकाभयप्रदाय नमः। ओम आकाशराजवरदाय नमः। ओम योगिहृत्पद्ममन्दिराय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम जगत्पालाय नमः। ओम पापघ्नाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम शिंशुमाराय नमः। ओम जटामकुटशोभिताय नमः। ओम शङ्खमध्योल्लसन्मञ्जुकिङ्किण्याद्यकरण्डकाय नमः। ओम नीलमेघश्यामतनवे नमः। ओम बिल्वपत्रार्चनप्रियाय नमः। ओम जगद्व्यापिने नमः। ओम जगत्कर्त्रे नमः। ओम जगत्साक्षिणे नमः। ओम जगत्पतये नमः। ओम चिन्तितार्थप्रदायकाय नमः। ओम जिष्णवे नमः। ओम दाशार्हाय नमः। ओम दशरूपवते नमः। ओम देवकीनन्दनाय नमः। ओम सौरये नमः। ओम हयग्रीवाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम कन्याश्रवणतारेढ्याय नमः। ओम पीताम्बरधराय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम वनमालिने नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम मृगयासक्तमानसाय नमः। ओम अश्वारूढाय नमः। ओम खड्गधारिणे नमः। ओम धनार्जनसमुत्सुकाय नमः। ओम घनसारलसन्मध्यकस्तूरितिलकोज्ज्वलाय नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय नमः। ओम जगन्मङ्गलदायकाय नमः। ओम यज्ञरूपाय नमः। ओम यज्ञभोक्त्रे नमः। ओम चिन्मयाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम परमार्थप्रदाय नमः। ओम शान्ताय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम दोर्दण्डविक्रमाय नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम श्री विभवे नमः। ओम जगदीश्वराय नमः। ओम श्री भूसहित श्री वेंकटेश्वर स्वामिने नमः। पुष्पै पूजयामि। ओम श्री पद्मावती मात्रे नमः। स्तोत्रनामावली। ओम पद्मावत्यै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम पद्मोद्भवाय नमः। ओम करुणप्रदायिन्यै नमः। ओम सुहृदाय नमः। ओम तेजस्वरूपिण्यै नमः। ओम कमलमुख्यै नमः। ओम पद्मधराय नमः। ओम श्रियै नमः। ओम पद्मनेत्राय नमः। ओम पद्मकराय नमः। ओम सुगुणाय नमः। ओम कुङ्कुमप्रियाय नमः। ओम हेमवर्णाय नमः। ओम चन्द्रवन्दिताय नमः। ओम धगद्धग धगद्धगत् प्रकाश शरीरधारिण्यै नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमः। ओम नित्यकल्याण्यै नमः। ओम कोटिसूर्यप्रकाशिन्यै नमः। ओम महासौन्दर्यरूपिण्यै नमः। ओम भक्तवत्सलायै नमः। ओम ब्रह्माण्डवासिन्यै नमः। ओम सर्ववाञ्छाफलदायिन्यै नमः। ओम धर्मसङ्कल्पाय नमः। ओम दाक्षिण्यकटाक्षिण्यै नमः। ओम भक्तिप्रदायिन्यै नमः। ओम गुणत्रयविवर्जितायै नमः। ओम कलाषोडशसंयुतायै नमः। ओम सर्वलोकानां जनन्यै नमः। ओम मुक्तिदायिन्यै नमः। ओम दयामृताय नमः। ओम प्राज्ञाय नमः। ओम महाधर्माय नमः। ओम धर्मरूपिण्यै नमः। ओम अलङ्कारप्रियाय नमः। ओम सर्वदारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः। ओम श्री वेंकटेश वक्षस्थलस्थिताय नमः। ओम लोकशोकविनाशिन्यै नमः। ओम वैष्णव्यै नमः। ओम तिरुचानूरुपुरवासिन्यै नमः। ओम वेदवेद्यविशारदाय नमः। ओम विष्णुपादसेविताय नमः। ओम जगन्मोहिन्यै नमः। ओम शक्तिस्वरूपिण्यै नमः। ओम प्रसन्नोदयाय नमः। ओम इन्द्रादिदैवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूजिताय नमः। ओम सर्वलोकनिवासिन्यै नमः। ओम भुजाय नमः। ओम भूजायै नमः। ओम ऐश्वर्यप्रदायिन्यै नमः। ओम शान्ताय नमः। ओम उन्नतस्थानस्थिताय नमः। ओम मण्डलाकामिन्यै नमः। ओम कमलाकराय नमः। ओम वेदान्तज्ञानरूपिण्यै नमः। ओम सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः। ओम कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः। ओम पूजाफलदायिन्यै नमः। ओम कमलासनादिसर्वदेवस्तुताय नमः। ओम वैकुण्ठवासिन्यै नमः। ओम अभयदायिन्यै नमः। ओम द्राक्षाफल पायसप्रियाय नमः। ओम नृत्यगीतप्रियाय नमः। ओम क्षीरसागरोद्भवाय नमः। ओम आकाशराजपुत्रिकाय नमः। ओम सुवर्णहस्तधारिण्यै नमः। ओम कामरूपिण्यै नमः। ओम करुणाकटाक्षधारिण्यै नमः। ओम अमृतानुजाय नमः। ओम भूलोकस्वर्गसुखदायिन्यै नमः। ओम अष्टदिक्पालकाधिपत्यै नमः। ओम मन्मथदर्पसंहारिण्यै नमः। ओम कमलार्थभागाय नमः। ओम
स्वल्पापराध महापराध क्षमायै नमः। ओम षट्कोटितीर्थवासिताय नमः। ओम नारदादिमुनिश्रेष्ठ पूजिताय नमः। ओम आदिशंकर पूजिताय नमः। ओम सौभाग्यप्रदायिन्यै नमः। ओम महाकीर्तिप्रदायिन्यै नमः। कृष्णातिप्रियाय नमः। ओम गंधर्वशाप विमोचकाय नमः। ओम त्रिलोकपूजिताय नमः। ओम जगन्मोहिन्यै नमः। ओम सुलभाय नमः। ओम सुशीलाय नमः। ओम अंजनासुतानुग्रहप्रदायिन्यै नमः। ओम ललितावधूट्यै नमः। ओम समस्त शास्त्र विशारदाय नमः। ओम सुवर्णाभरणधारिण्यै नमः। ओम इह परलोक सुखप्रदायिन्यै नमः। ओम करवीर निवासिन्यै नमः। ओम नागलोकमणि सहाय आकाश सिंधु कमलेश्वर पूजित रथागमनाय नमः। रथगमनाय नमः। ओम श्री श्रीनिवास प्रियाय नमः। ओम चंद्रमंडल स्थिताय नमः। ओम अलिमेलु मंगाय नमः। ओम दिव्य मंगलधारिण्यै नमः। ओम सुकल्याण पीठ स्थिताय नमः। ओम काम्य कवन पुष्प प्रियाय नमः। ओम कोटिमन्मथ रूपिण्यै नमः। ओम भानुमंडल रूपिण्यै नमः। ओम सर्वमानववासिन्यै नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम दिव्य ज्ञानाय नमः। ओम सर्वमंगलरूपिण्यै नमः। ओम सर्वानुग्रहप्रदायिन्यै नमः। ओम ओंकार स्वरूपिण्यै नमः। ओम ब्रह्मज्ञान संभूताय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री पद्मावती मात्रे नमः। स्तोत्रनामे पूजय पुष्पै पूजयामि. Tomorrow we'll do Durga, or tomorrow being Adi Shankara Jayanti, we may do Adi Shankara. Tomorrow classes are at evening 4 p.m. Om Bhurvo Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya. Morning classes as usual. No change, 7:30 onwards. Taittiriya Upanishad, Yoga Darshanam, 10:30, our Mundaka Upanishad, and Gita for the youth. Devandasta Bhagava. Nirajanandarshaya. Om Natattva Surya. ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. ओम मंगलम श्री कृष्ण मंगलम कौसलेन्द्राय वंशसारभावाय. ओम ब्रह्मादिव्यो ब्रह्मज्ञो ब्रह्मलोकादाशेष ये मे गुरु व्याख्या. ओम सियावर रामचंद्र भगवान की जय. दासरथा सीता तन्नो राम प्रचोदयात्. ओम राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय. ओम उमावर चंद्रचूड़ भगवान की जय. श्री रामायण महाभारत भागवत उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र योग वासिष्ठ पातंजलि योग सूत्र अध्यात्म रामायण शिव पुराण सूत संहिता सनातन वैदिक संस्कृति श्रुति स्मृति पुराण इतिहास शास्त्र की जय. श्री वेद व्यास सुखदेव सूतादि भागवताचार्य की जय. श्री वेद व्यास वशिष्ठ विश्वामित्र वाल्मीकि तुलसीदास आदि रामायणाचार्य की जय. श्री वेद व्यास वैशंपायन आज्ञवल के आद्य शंकरादि ब्रह्म विद्याचार्य की जय. हिरण्य गर्भ कपिल पतंजलि व्यास आदि योग दर्शनाचार्य की जय. बोलो भाई सब संतन की जय. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. आज के आनंद की जय. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. हर सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद गोविंद जानकी जीवन स्मरण. जय जय राम राम. अम्बे अम्बे आदि पराशक्ति माता की जय. समस्त होता भक्त साधक सेवक उपासक जिज्ञासु गण की जय. Thank you. Tomorrow, Adi Shankara Jayanti. We are following Adi Shankara reinstated Advaita Brahma Jnanam. So he is our Aradhya Deva. In classes, every class we do something related to him. At least one stotra or one bhajana or a stotram, thoda thoda. But you at home invoke him in your hearts. You yourself enter into him and ask him to bless us with the vision of the Advaita to be lived for moksha. Wonderful day tomorrow. Adi Shankara Bhagavan, who is avatar of Lord Shiva only. You know, when Vyasa Bhagavan gave us all Purana, Vedanta, Ityadi, who is Narayana's avatara, then to comment on them for our understanding, Lord Shiva came as Adi Shankara. That is why Shankaram Shankaracharyam, Keshavam Badarayanam, Sutra Bhashya Krutau Vande Bhagavantau. So Shankara and Keshava are Sutrakara, Shankaracharya and Vyasa Bhagavan are the Bhashyakara. To them our salutations. So the arrival of Shankara on this horizon to re-establish the Advaita Jnana and all the Sampradaya, everything he gave. Bhakti Marga, Yoga Marga, Karma Marga, Adhyatma, Vedanta Tattva Marga, and he turned all our attentions again towards the truth or reality. The work done by Bhagavan Adi Shankara is colossal. So tomorrow is Janma, silently in our heart we invoke his presence. We will not do big hangama and all, we do in our own small way. Thank you.